आईआईएम इंटरव्यूज क्रैक किया तो आपको तो सब कुछ आता होगा। पॉलिटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, क्वांटम फिजिक्स, रॉकेट कैसे बनाना है वो भी आंसर कर दिया होगा। इतना अनहेल्दी ऑब्सेशन कैसे हो गया आईआईएम इंटरव्यूज से, आई डोंट नो। बट द रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड वही मिथ्स इस वीडियो में कवर करते हैं। द आइडिया इज दैट यू डोंट नीड टू गिव अ परफेक्ट इंटरव्यू टू क्लियर आईआईएम इंटरव्यूज, यू जस्ट नीड टू बी डिसेंट. So the first myth is you need to answer most of the questions in the interview, but the reality is you need to answer most of the basic questions in the interview. That is, मान लो आप इंजीनियर हो, आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, देन इट्स अ प्रॉब्लम. मैकेनिकल इंजीनियर हो, बर्नौलीज थ्योरम नहीं पता, इट्स अ प्रॉब्लम. इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो, डिमांड सप्लाई कर्व नहीं पता क्या होता है, इट्स अ प्रॉब्लम. बीकॉम कैंडिडेट हो, बेसिक अकाउंटिंग नहीं पता, इट्स अ प्रॉब्लम. बट देर विल कम अ स्टेज द इंटरव्यूअर आपको एडवांस स्टेजेस में ले जाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस में ले जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, काफ़ी सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एवरीथिंग, इट्स परफेक्टली फाइन. अगर आपको नहीं पता कि हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, इट्स एब्सोल्युटली फाइन अनलेस एंड अनटिल यू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. अगर आपको नहीं पता आपके स्टेट का गवर्नर कौन है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन अनलेस एंड अनटिल यू कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड. ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी सारे कॉमन नॉलेज क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको पता होना चाहिए. बट इवन इफ यू डू नॉट नो दैट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आपका आपके बैकग्राउंड और बेसिक जो नॉलेज है वो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए. उसके बाद करंट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट कुछ आइडिया होना चाहिए कि क्या वर्ल्ड में हो रहा है. बट यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अंडर द सन. एंड वन ऑफ द रीजन दैट यू आर मिसगाइडेड हियर इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट दैट यू रीड फ्रॉम द इंटरव्यूज ऑन ऑल्सो द ट्रांसक्रिप्ट दैट यू रीड ऑन कोडा एंड अदर साइट्स लाइक दैट. प्रॉब्लम ये दो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट वाज स्पेसिफिक टू हिज और हर पर्टिकुलर बैकग्राउंड एंड टू द आंसर्स दैट ही हैड गिवन टू द प्रीवियस क्वेश्चन. And if you are in that particular situation, probably you will not be asked that question. Probably you will be asked questions from your background which you might find it easy to answer. First, ये reason होता है. Second, एक बहुत important reason, and you need to understand this, most of these transcripts are written after the interview. So कोई भी candidate on social media does not want to look foolish, right? कोई भी ऐसा simple question अगर उसने आंसर नहीं किया होगा, obviously वो transcript पे उसको आंसर भर सकता है. What happened during the interview between the candidate and the interviewer, only those two people know, right? So that is something that you need to understand, that जो transcripts होते हैं, probably that was made after the interview. जो जिस फॉर्म में आंसर्स लिखे गए हैं, probably it was not answered in the same way. So अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि transcripts are not the actual reflection of the interview, ये बात भी समझ लेना. And ये this is a second myth as well, that you will get selected if you answer all the interview questions. That is not the reality. It's not only about how many facts you remember, how much you can remember, how much facts you have crammed in your head. It's also about how you express what you already know. So एक IIM प्रोफेसर ने बताया था दो रेड फ्लैग्स होते हैं उनके लिए इंटरव्यू में. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडेट्स हु आर वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, प्रॉब्ली दे आर आंसरिंग क्वेश्चंस वेल बट स्टिल दे आर फीलिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, या फिर वो कुछ आंसर्स नहीं कर पाए, उसके बाद ऑल देयर शोल्डर्स हैव ड्रूप डाउन. ये तो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग होता है उनके लिए, विच प्रॉब्ली माइट नॉट गेट सिलेक्टेड. But at the same time, it's also a red flag when there's a candidate who is answering everything really, really well, but is showing a lot of frustration, a lot of attitude, as if they have lost the potential to learn something. They think that they know it all. That's also a very big red flag in the interview. You have to show that humility. For example, कोई भी ऐसा particular question हो जो शायद interviewer is trying to contradict you and candidate is like, no, what you are saying is wrong, what I am saying is the correct version, and is not willing to listen to the interviewer, interrupting them. Maybe उस particular field में उस candidate का knowledge बहुत ज़्यादा हो, but the way, the demeanor that you show, the way that you express that particular feeling, that is something which will show to the interviewer, and that is also something that will determine your selection. Just answering the question well is not something which will help you get into that college. It's also about how you answer it. And when I say you need to express your answers properly, it doesn't mean you need to look very extroverted or flamboyant in your attitude. A lot of mock interviewers told me before the interview that you need to bring a little bit more flair and flamboyance to your answers, add more spice to the answers. For example, tell me about yourself answer. मैं काफ़ी to the point answer कर रहा था, and this person worked on these things in my school, college and work and so on. तो काफ़ी standard answer दे रहा था, but they were like, no, you need to add more compelling narrative to this. Hailing from this particular background and have shaped my life in these ways, and काफ़ी सारे ऐसे जंबो एंड चीज़ें वो ऐड करने बोल रहे थे. Luckily, I did not listen to them and I stuck to my strength, and that was humility, to the point answers, structured answers, and that worked. I converted all the IIM interviews, and that too with pretty much ease as well. The idea was very simple कि
आप अपनी एटीट्यूड फेक कर लोगे फॉर 1 आंसर और 2 आंसर्स, बट इंटरव्यूज़ गो ऑन फॉर 25-30 मिनट्स। आप कंटिन्यूअसली उस एटीट्यूड को फेक नहीं कर सकते। अल्टीमेटली द रियल यू विल कम आउट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप जो हो बस वो बताओ। इट डज़न्ट मीन इफ यू आर आंसरिंग लाइक नॉर्मली, यू आर नॉट एडिंग अ लॉट ऑफ like fancy words or fancy expressions in your answer, it doesn't mean that you are doing something wrong. You can answer very simple way, in a very simple way as well, and that's perfectly fine. And remember, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, कोई भी MBA इंटरव्यू, go with the belief that they are sitting there to accept you and not to reject you. कोई भी IIM इंटरव्यूअर या कोई भी MBA का इंटरव्यूअर अगर आपको 25-30 मिनट्स अपने टाइम का दे रहे हैं, that time is valuable. वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं, they're not there to reject you. So don't go with the belief that you need to do something extraordinary to get selected. Rather, try to avoid doing things that can get you rejected. If you go with this particular belief, what will happen is that will give you a lot of confidence कि आपको कुछ बहुत extraordinary नहीं करना है. It's just a simple conversation, and you just need to have that conversation with the interviewer. You just need to avoid doing silly things. Mostly जब people कुछ extra करने चले जाते हैं ना, they get like trapped in their particular answers only, and then they do a mistake and they are never able to come out of it. So that is something that you need to avoid. Just answer to the point. आप answer करते जाओ. Simple conversation है. Don't try to do anything extraordinary which you are not comfortable with. And one very important thing that you should keep in mind is जो आपका interview ले रहे हैं वो भी एक human है. So there is a little bit of subjectivity and luck involved in these particular rounds. Obviously there are objective parameters that they are rating you on, but at the same time their understanding of you is definitely going to be subjective. So that is something that you need to keep in mind. Obviously don't take it at heart if you get rejected. It's not that you were not worth it, that's why you were rejected or something of that sort. At the same time this feeling will keep you grounded, because ये luck factor कब diminish हो जाता है, जब आप बहुत सारे interviews देते हो, probably you are attending 5 or 6 different B schools के interview, then ये luck factor diminish हो सकता है, because one bad interview does not mean कि आपके सारे interviews खराब जाने वाले हैं, and one good interview does not mean आपके सारे interviews ही अच्छे जाने वाले हैं. There can be a lot of factors in that particular day. Interviewer क्या question पूछ रहा है, how you are feeling that particular day, interviewer की क्या understanding है about you, काफ़ी सारी चीज़ें different हो सकती है. Maybe your answers were good for a particular panel but might not be good for another panel. So ये चीज़ें definitely involved होती है. The best you can do is try your best in every particular interview. जितने ज़्यादा options आपके पास होते हैं, obviously luck factor उतना diminish हो जाता है. You will definitely make it to at least one good B school if you have a lot of options. So the final tips from my end: keep your interview very simple. It's a simple conversation. Always show humility. Always keep smiling. Do not show any sign of frustration at any point of time. The interviewer might interrupt you at different points of time, might also not accept your answers, might say that you're completely wrong, might reject all your answers, but they are testing you. You don't need to show frustration. Still remain humble. There is a way, there's a noble way to express your feelings. So please try to do that, and I'm pretty sure that you will crack the interviews.